Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Students, am I audible? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes. Okay, now I'm getting voice from your side also. I just checking that. Fine. Okay, students. So अभी 2-3 मिनट वेट करते हैं जिससे कि बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर सेशन.
Okay, students. So here we are starting our session now. So I'm sharing my screen first. So I have shared my screen. I hope my screen is visible to all of you. Yes. Yes, sir. Yes, sir, it's visible. Visible. So today we are starting with tuple. So as we know, in Python programming, we have 6 standard data types. That is number, string, list, tuple, dictionary, and set. Already we have discussed about that how can we deal with numbers, string values, and list values. And along with the concept of these, we have seen various methods, various functions based on these types. So today we will be discussing about tuple now. So what is tuple? Tuple is similar to your list with some differences. So when we are talking the case of similarities, tuple is also used to contain multiple values, and these multiple values can be of same type, these can be of similar type, so these can be of different type. So it is also collection of values. और वैल्यूज के लिए हम कभी कभी इसको एलिमेंट्स, कभी कभी हम इसको आइटम्स, ये वर्ड्स भी हम यूज कर लेते हैं जस्ट टू स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ टपल और लिस्ट. Sometimes we call it item, sometimes we call it element. That is same, right? So, but and it is also sequence type. As I mentioned, we have divided our data types into two categories: sequence type and non-sequence type. So it is also sequence types. So it is also sequence type. Sequence type means we will be here also we will be able to use the concept of indexing and slicing in the similar way as we have used with a string and a list, right? So indexing and slicing will be working in the similar way. Now come to the differences. ये तो है similarities की बात. अब आते हैं हम differences पे. Tuple is mutable. Sorry, tuple is immutable. See, list was mutable, means initially you can assign some value in list. After that, if you want to change, you want to perform any kind of modification, you can perform that. But as we specified, tuple is immutable. So once you have assigned the value in tuple, after that you will not be able to change the values. Means you cannot add new values with the existing tuple, you cannot remove specific value or values, or you can not modify any value of a tuple. Although some exceptions are there, उनकी भी बात करेंगे हम. So tuple is immutable. Immutable means once you assign, that cannot be changed. हाँ, अगर पूरे tuple को ही आप change कर दे रहे हो या delete कर रहे हो, then it can be done. Otherwise, if you are trying to perform any kind of modification with the specific element or element set of element, then it is not possible with tuple because it is immutable, like your number and string. Number, string, these are also immutable types. So now to specify the multiple values of a tuple, you can use parenthesis. List के केस में हमने use किया square bracket. Here we will be using parenthesis to specify tuple, right? And tuple is mutable means you can say it is you kind of read-only list. Sometimes we call this. Yes, is there any doubt? Somebody is on unmute, please mute yourself. So to specify the value, you will specify comma separated value within parenthesis, right? So here you will specify comma separated value within parenthesis. So you can specify any number of value as per your
requirement, and these values can be of similar type or these values can be of different type, right? Even if you are specifying your values which are comma separated without parenthesis, that will also be treated as a tuple. That is also a tuple. The main thing is कि जो values है मेरी, these values should be comma separated. Comma separated value अगर parenthesis use नहीं भी कर रहे, in that case also it will be a tuple. So now I'll take one example of it so that the syntax part can be clear. So I'm going to take that example here. Suppose it's time to switch over ideally. So suppose I am creating a tuple, I am giving a name T1, and here you can specify a comma separated value which will be specified within parentheses. So you can create such type of tuple which is containing similar type of values. It's a tuple. If you check the type of it, it's a tuple. Even these values, if you are specifying comma separated values without parentheses, even in that case, also that will also be same. It is also a tuple, right? So, but it is recommended that to provide your code clarity, you should make a habit to use parentheses, right? So here, now even you can create such type of tuple also, which can contain mixed type of values. So here we can create such type of tuple also, which can contain mixed type of values. Right. So see here we are creating tuple which is containing different types of values. So here in this way also we can create tuple. And if we want to print it in the cell, I can write directly T1. If you will be writing the same code in a script, then you need to pass T1 with the print function to display the values on the screen. So here in this way your value will be printed. Even it is also possible. See, as I mentioned, when you are defining the values of a list, that list can also contain different types of value. Even you can use list also as one element of it, which is known as nested list. So similar will be the case with tuple also. Even we can have such type of value which is of tuple itself. So tuple type value bhi hogi, and this is known as nested tuple. Suppose I am creating one element. So here it is a tuple. And to access the value, as I have already mentioned, here also we will be using indexing. Indexing will be working in the similar way as it has worked for string and list. So यहाँ पे भी जो indexing है, it will be started from 0. So at index 0 we will be having 1. At index 1 we have this. At index 2 we have this. At index 3 we have one value which is of tuple type. So it is nested tuple, right? You are specifying this tuple within this tuple. That is why we are calling it nested tuple. Even you can create such type of tuple which can contain other type of value, like means we can create which is containing list. Even your list may also contain tuple. So here you can see. So we have this, and if you want to access any value, suppose I want to access hello. So you can write T1 to specify index. We use square bracket, and here we can, if I want to access the value of hello, what should I enter here? क्या index value मेरे को enter करना चाहिए यहाँ पे? Yes, tell me. 2, sir. Yes. So because index is 0, 1, 2. At index 2 we have hello. So if you want to access it, we can make use of it, right? और अगर मेरे को एक लिस्ट इस वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है, then it is very easy. कैसे करेंगे? हाँ जी, कैसे करेंगे? मेरे को इस पूरी लिस्ट को एक्सेस करना है. How can you do that? 4 करेंगे सर. T1 bracket 4. बिल्कुल 4 करेंगे. Because here for this complete element we have index 4. So basically, as we have mentioned, it is like this. सर एक डाउट, क्या हम वो लिस्ट के वैल्यू चेंज कर सकते हैं if it is within the tuple? आ रहे हैं
We are coming to that also. इसीलिए मैंने एक स्टेटमेंट यूज किया था, although there are some exceptions, right? तो वही पॉइंट है। हाँ, और उस पे भी आएंगे, स्टेप वाइज चलेंगे, है ना? सो हाँ, सो बेसिकली ऑलरेडी यू नो द इंडेक्सिंग कि नेस्टेड कैसे काम करती है। नेस्टेड एलिमेंट को भी अगर मेरे को एक्सेस करना है, इसी बेसिस पे हम एक्सेस कर सकते हैं। एज यू नो, इफ वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ थिंग एंड यू नो दैट हियर just for representation I'm using it. So already you know that this for this we will be having index 0. So we have index 1, 2. And for this 3. So for this complete string, actually we are having this index 2, which will be in the sequence 0, 1, 2. And for this somebody also please mute yourself. Please mute yourself. And similarly here also we have. So here, if you see this string, this tuple, this list, these are also fit. These are iterable types. Means we have indexing for this also. In the case of string, it is a collection of character. So we have index for these also. For 0, for this h, we have index 0. For this e, we have 1, 2, 3, 4. Similarly, we have 8 index 0 in this tuple. We have 100. For index 1, we have 200. Similar is the case with this list also, right? So if I want to access a particular value, suppose I want to access 200 from this tuple, how can you do that? How can you do that? T1 bracket 3 bracket 1. Here we will be using square bracket. First of all, if I want to access this 200 value here, first of all, we will be using outer index, right? First of all, we will reach to this, and to reach to this value, what index should we use? 0, 1, 2, 3. So index will be 3. So when we are using T1, 3, T1, 3 means this complete tuple. But I want to access a specific one from this. So obviously I will be using one more bracket. And here to access this value, index is 0, 1. So you will be using like this. Right. So here it is, we are specifying this 200 values here. Right. So this value will be accessible. So it is working like this. Right. Now come to the some changes. So how can you change the value? Modification. Suppose in the case of list, you can perform changes. Suppose if I'm having list, one list here, it is a list, and we have some values. And already know if I want to change this 20, suppose instead of 20, I want to write 200. So you know that we can use like this L1, 8 index 1, we have this. So if you want to change it, we can assign new value to this and it will be changed, right? If we look at so it has been changed. But can we do the same thing with tuple? Suppose we have this tuple, and if we will try to, suppose I want to change this value. Instead of 2, I want to write 20. So can you do that? So we can write like this T1 1 equals to Hello.
Hello, sir. Okay. Okay. I think there was some connectivity issue. Am I audible now? Am I connected? Yes, Can you sir. hear me? Right, sir. Okay. Okay. Yes, Fine. sir. Yes, sir. Okay. So here we were discussing about that. कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ था मैं? ये हम ले चुके थे, ये कर चुके थे अपने सेशन में. कहाँ पे सर डिस्कनेक्ट हुए थे? टपल में आप इंसर्ट करवा रहे थे. हाँ. तो सी टपल में हम वी आर ट्राइंग टू असाइन. हियर यू हैव सीन विद द लिस्ट वी कैन परफॉर्म मॉडिफिकेशन विद एनी ऑफ द वैल्यू एट एनी टाइम. But if you will try to do the same with tuple, can we do that? Here actually when we have written t1 1 equals to 20, it means I am trying to change this value from 2 to 20. Can we do that with tuple? No, sir. No. Sir. No. Why? No, sir. Because yes, we cannot do that because tuple is immutable. Immutable. So if I am trying to do that, it will give you error. And see the error. Type error, tuple object does not support item assignment. So you cannot do that, right? You cannot change that. But suppose here we are working with list. List is यहाँ पे ये जो element है ना tuple का, it is of mutable type. ये list जो है mutable है. It can and we can perform change within the list. So if I am writing like this, to specify this list, index is 4, right? At index 4 we have this complete list. So if I'm instead of this list, if I'm trying to assign this, can we do that? No. No. No, because here also thing is same. You are trying to change the specific value of it. तो ये नहीं change कर सकते, right? अगर इसको हम try करें तो it will not be done. But if I am writing this, suppose if I am writing means now I am trying to suppose I want to trying to change the value within the list. Instead of 2000, suppose I want to write 5000. So to specify this value, we can write 4. At 4 we have at this location, and if I want to access this value, so index will be 0 1. So it will be 1. And here instead of 2000, suppose I want to write 5000. Can we do that now? Can we do that? Yes. 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 Sir. Because see, in this case, logically, if we think here, actually we are trying to perform some modification within the list, and list is mutable. So obviously we can do that. अगर tuple के अंदर कोई mutable element है और उस mutable element को अगर मैं as a whole उसको change करना चाहूँ, we cannot do that. But if I want to perform change within that mutable type, so it can be done because mutable type पे आप mutable type के अंदर आप कोई भी change कर सकते हो. Although it is a part of tuple, but you are trying to perform some changes within it, right? Within it. So within it you can do that. But as a whole अगर इसको करना चाहते हैं आप, जो कि tuple का एक element होता है, वो नहीं कर सकते. So if you try to do that, it can be done, and your tuple will be like this. Are you getting this point now? Yes. Sir, if there is a tuple inside a list, then it cannot be changed like this. Yes, बिल्कुल बिल्कुल. So इसी लॉजिक को अगर हम थोड़ा सा लिस्ट के बेसिस पे ले तो वहां पे भी बिल्कुल ये सिनेरियो का. सपोज आई एम क्रिएटिंग ए लिस्ट. आप एक लिस्ट क्रिएट करते हैं और लिस्ट को बताने के लिए वैल्यू शुड बी डिफाइंड विद इन ब्रैकेट. सो इट्स ए लिस्ट नाउ, राइट? इट्स अ लिस्ट नाउ. सो सपोज मैं यहाँ पे कहीं पे भी चेंज करना चाहूँ, इसको भी चेंज करना चाहे, चेंज हो जाएगा, राइट? अगर मैं एज ए होल इसको चेंज करना चाहूँ तो चेंज हो जाएगा क्योंकि लिस्ट में चेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा ट्राई करूँ, कैन वी डू दैट? क्या लिस्ट पे ये ऑपरेशन चलेगा? यस सर, चलेगा. हो जाएगी वैल्यू असाइन, चेंज हो जाएगी वैल्यू? नहीं होगी सर, क्योंकि वो क्योंकि वो टपल. टपल है. हाँ, देखते हैं क्या करने की कोशिश करें हम. सी इंडेक्स 3 पे क्या है? 0 1 2 3. एट इंडेक्स 3 वी हैव टपल.
लेकिन मैंने एक और लिखा 1 मीन्स 0 1 मीन्स वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म चेंजेस विद इन टपल. इज इट पॉसिबल? Yeah. No. क्या टपल में हम चेंज कर सकते हैं टपल के अंदर किसी वैल्यू का? नो सर. तो नहीं नहीं, कर लेकिन हम कोशिश यही करें कि वी आर ट्राइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ दिस टपल 200 to 500 and we have mentioned that tuple is immutable. We cannot. So if you try to do that, you will be getting same error, right? Tuple object does not support item assignment. हाँ, इसको अगर मैं ऐसे करता, स्पेसिफिक एलिमेंट की बात ना करके एज ए होल इसके एक सिंगल एलिमेंट, इसके एलिमेंट की एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करता टपल, तो मींस पूरे इसको रीअसाइन करता है, इसको पूरे को चेंज कर रहे हैं बेसिकली. सो कैन वी डू दैट नाउ? इस वैल्यू को, लिस्ट की इस वैल्यू को हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. Instead of this, I want to write 500. Can we do that? कर सकते हैं Yes. सर. Yes, sir. So that can be done. क्योंकि यहाँ पे आप लिस्ट के एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं, ना कि लिस्ट के अंदर के टपल के अंदर आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे लिस्ट के एलिमेंट को कर रहे हैं तो इट कैन बी डन. तो इंस्टेड ऑफ नाउ दिस टपल वी विल बी हैविंग दिस 500, राइट? तो ये चेंज हो जाएगा. बट टपल के अंदर चेंज करें तो लॉजिकली इट इज नॉट पॉसिबल एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ टपल, राइट? तो जो केस यहाँ पे हमने इसके साथ लिया है, टपल के अंदर अगर म्यूटेबल एलिमेंट है वो चेंज हो जाएगा. इसी तरह से अगर म्यूटेबल टाइप के अंदर लिस्ट के अंदर अगर कोई इम्यूटेबल एलिमेंट है और उस इम्यूटेबल एलिमेंट के अंदर अगर आपको चेंज करने की कोशिश करें, इट कैन नॉट बी डन एज पर द कॉन्सेप्ट, राइट? सो नाउ विद दिस वी विल हैव लुक एट आवर पीपीटी नाउ. So see, so a tuple is another sequence data type that is similar to the list. A tuple consists of a number of values separated by comma. Unlike list, however, tuples are enclosed within parentheses. The main difference between list and tuples are lists are enclosed in bracket and their element and size can be changed, while tuples are enclosed in parentheses and cannot be updated. किसी स्पेसिफिक वैल्यू को अगर आप चेंज करना चाहें वो नहीं होगी. हाँ, पूरे टपल को ही आप चेंज कर दे या डिलीट कर दे, दैट कैन बी डन. Tuples can be thought of as read-only list. The parentheses are optional, but is a good practice to write it. Already we have taken this. A tuple can have any number of items and they may be of different types, right? So here you can see, if you want to specify this empty tuple, you can define like this. It is tuple with similar value which are of integer type. Even tuple can contain mixed type of value. Even you can have nested element also within tuple. These nested element can be nested list or it can be nested tuple, right? Even you can specify tuple without parentheses by specifying the values in comma separated manner. तो comma separated values हैं वो भी एक tuple होती है. उस concept को हम इस तरीके से भी use कर सकते हैं. This thing is known as tuple packing. You are specifying with same name, so it's kind of packing, right? And here if you want to store this value in different variable, it is known as unpacking. ये during the initial sessions we have taken this kind of example, right? अब थोड़ा सा और clarity इस example में. तो क्या वैल्यू होगी अगर मैं सिंटैक्स को यूज करूं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर दिस इज लाइन. इफ आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए हियर? 3. इट विल बी 3 क्योंकि कॉरेस्पोंडेंस में होगी, राइट? वैल्यू ऑफ बी विल बी 4.6, वैल्यू ऑफ सी विल बी दिस डॉ. This we have already taken. And as we have mentioned, tuple is also sequence type. So all the concept of slicing, indexing will be working in the similar way as this concept has worked for your string and tuple. तो यहाँ पे भी अगर हम slicing use करें, if I want to access more than one value, we can use slicing in the similar way. And with tuple also, this multiplication symbol is known as repetitive operator, and this plus is known as concatenation operator, right? तो यहाँ पे भी इसी तरीके से काम करेंगे जैसा हमारा प्रीवियसली किया था. अगर हमारा इफ आई एम टॉकिंग एग्जांपल ऑफ वन टप्पल, कोई भी टप्पल ले लें हम यहाँ पे, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम जस्ट रिमूविंग दिस एलिमेंट. सपोज वैल्यू कर लेते हैं. सो विद दिस टप्पल, इफ आई एम राइटिंग दिस, मैं सपोज दो टपल है T1 और एक और T2 टपल है. Here also we have some values.
वैसे तो ये भी टपल है बट कोमा सेपरेट करें तो बेटर है. So we have two tuples now, T1 and T2. So if you are using, if you want to access any value from a tuple already, you know, हम indexing भी यूज कर सकते हैं, we can use slicing also. Suppose अगर मेरे को ये दोनों वैल्यू को एक्सेस करना है तो क्या लिखना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए? T1 slicing similar way में काम करेगी, start to end से कम. So if I want to access these two value, what should I write? पहले तो स्टार्ट करना है सिट से, तो 0 1 2. So 2 colon and just Two leave it. 2 colon. colon 4. And 2 colon 4 क्योंकि उससे कम लेता है, राइट? सो हियर इट विल गिव यू दैट. इवन इसके नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी आप यूज कर सकते हैं. अगर मैं कुछ ऐसा करता है यहाँ पे, आई वांट टू टेक द वैल्यू 2 एंड इफ आई एम राइटिंग लाइक सपोज नेगेटिव इंडेक्स भी अगर हम यूज करें तो क्या कर सकते थे? -1 कर सकते थे सर 4 को. हाँ, -2 क्या -1 करने से आ जाता? और नहीं ये सर 4 को -1 करने से -2 -1 -2 -1. सॉरी सर आ जाएगा. 2 -1 भी चल जाएगा और -2 यही आउटपुट चाहिए. -1 भी चल जाएगा. हाँ सर. आर यू सर श्योर? ये See, it means it will take the value starting from this index up to this -1. Up to this -1 इससे एक लोकेशन पहले, तो सेम आउटपुट नहीं आएगा. Are you getting? यस. Are you getting? और एक Yes, और sir. चीज है यहाँ पे, देखो एक और चीज देखने के लिए आई, बड़ी इंटरेस्टिंग. See, if you want to specify any tuple which is containing only single element, it will be defined like this. क्योंकि अगर मैं सपोज एक मैंने टपल किया T3 और उसके अंदर एक ही वैल्यू और मैंने बताया कि पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू हो, तो वो टपल होगा. अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक, इज इट टपल? No, sir. क्या है ये? T3 क्या होगा? T3 वेरिएबल है सर. नहीं, T3 तो वेरिएबल है. इसका डेटा टाइप क्या होगा? ये किस टाइप का है? टपल है ये या कुछ और ये टाइप का? string नहीं है. स्ट्रिंग है. So it's a string. It's not a tuple. So how can we define this as a tuple which is containing only one element? So if you are defining such type of tuple which is containing only one element, तो उसके करने के लिए आप कोमा यूज करो, क्योंकि कोमा सेपरेटेड है. अब अगर मैं इसको ऐसे करूं और फिर चेक करूं टाइप, नाउ इट इज अ टपल. और यही सिनेरियो यहाँ पे भी हुआ. देखो, इस एज पर दिस सिनेरियो इट इज कंटेनिंग ओनली वन वैल्यू, क्योंकि -2 colon -2 हो गया ये, एक तरीके से वहां तक लेगा वैल्यू. तो इट इज नॉटिंग ओनली वन वैल्यू, लेकिन वन वैल्यू एज ए टपल, एज ए पार्ट ऑफ टपल हम स्पेसिफाई करें सिंगल वैल्यू को, तो इसलिए कॉमा आया है यहाँ पे. आर यू गेटिंग दिस सिनेरियो? ये भी रिप्रेजेंटेशन है. अच्छा, अब आते हैं फिर से यहाँ पे. अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करना है तो यही आउटपुट चाहिए, तो क्या कर सकते हो आप? -2 और यहाँ पे कुछ करो ही मत. आर यू गेटिंग? तो sir. क्या मीनिंग हो गया इस सिनेरियो का? इट इज टेकिंग वैल्यू स्टार्टेड फ्रॉम -2 एंड इट विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम दिस, और यही हमें चाहिए. तो क्या हम यहाँ पे करें? सो हियर यू कैन सी वी विल बी गेटिंग सेम आउटपुट. आर यू गेटिंग? तो जो Yes, sir. सेम कॉन्सेप्ट हमने स्ट्रिंग लिस्ट के साथ यूज किया है, सिमिलर वे में वो सारे कॉन्सेप्ट इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग से रिलेटेड यहाँ पे भी काम करेंगे. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर. सर वो रिवर्स स्लाइसिंग का और एक एग्जांपल वाला कौन सा दो? हाँ, रिवर्स का यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे काम करती है बेसिकली. हाँ, अगर हाँ. मैं इस पे काम करूं तो ये -1 -2 -3 -4 इस तरीके से आपका काम करेगा. कोई भी वैल्यू मेरे को एक्सेस करनी है तो वी कैन मेक यूज ऑफ इट. चलो इसी को लेते हैं, कोई लिस्ट फिर से यहाँ पे ले लेते हैं. तो यहाँ पे क्या हो, इंडेक्सिंग आप -1 -2 -3 -4 ऐसे भी है, लेकिन वैल्यू आपकी लेफ्ट टू राइट ही जाएगी. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ T1, सपोज मेरे को चाहिए ये दो वैल्यूज और नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू लेना है मेरे को, ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू लेना है, तो क्या एंटर करना चाहिए? तो मेरे को स्टार्ट करना है वैल्यू को यहाँ से. अगर मैं नेगेटिव ही यूज कर रहा हूँ इसके लिए 1 भी लिख सकते हैं, 0 1, या नेगेटिव लिख रहे हैं तो -1 -2 -3. इसका इंडेक्स कितना हुआ? -3 कॉलन. और इट आई वांट टू गेट अप टू वैल्यू दिस, इससे एक लोकेशन पहले. इसका अगर -1 है, इसका इंडेक्स है -2, तो इसको हम क्या करेंगे? -1. As per this scenario, because I have mentioned in slicing value कैसे लेता है, it will take the value starting from this index up to this -1. तो -1 means -2. So it will take the value from index -3 up to -2. और ये क्या है?
-3 से लेके -2 तक ये वैल्यूज हैं और लेफ्ट टू राइट ही लेगा तो ये आउटपुट आपका आएगा। आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी, Yes, आर यू sir. गेटिंग? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सपोज अब बताइए क्या आउटपुट आएगा? Hello 1000. सर हेलो सिर्फ हेलो Hello 1000. सर हेलो हेलो कॉमा हेलो आएगा। हेलो हाँ, अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। हेलो 1000 बोल रहे हैं कोई बात नहीं। सी इट मीन्स इट विल टेक द वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इंडेक्स अप टू दिस -1। तो कहां से -1 का मतलब -2 हो जाएगा, -1 -2। सो इट विल टेक वैल्यू अप टू फ्रॉम 2 to -2। लेकिन ये 2 और -2 यहाँ पे सेम ही है। तो बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू दिस वैल्यू एट इंडेक्स 2। तो 2 - 2 दैट इज सेम वैल्यू, सो इट विल गिव यू हेलो। आर यू गेटिंग? हाँ जी, जो हेलो 1000 कह रहे थे अब क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अब तो डाउट नहीं है? No, जिन्होंने sir. हेलो किया दैट इज फाइन, ठीक है। सो हियर और सेम केस है, ये सिमिलर उनके साथ भी ऐसे ही काम करता है, लिस्ट और टपल में भी वही है। तो कॉन्सेप्ट ये सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सो हियर वी आर हैविंग दिस इन दिस वे, वी कैन यूज दिस। अब आते हैं कुछ मेथड्स पे। सो एज यू नो दिस tuple is immutable, so we don't have any functions through which we can add new values or modify specific value or delete specific value. We don't have any functions related to that. लिस्ट के साथ बहुत थे बट यहाँ पे नहीं है। तो अगर हम चेक भी कर रहे हैं ना, यहाँ पे T1 मेरा टपल टाइप है T1 डॉट, तो सी यू हैव ओनली 2 फंक्शंस विद दैट, काउंट, और काउंट ऐसे ही काम करेगा जैसे लिस्ट के साथ काम किया था। Here it will use to specify how many number of times a particular value is existing. अगर मैंने यहाँ पे लिखा here if I am writing 2 here, what will be the answer? It means you are trying to find out how many number of times this value 2 is occurring here in tuple. तो कितनी बार आ रही है? एक ही बार आ रही है, तो it will give you 1. और अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स यूज कर दूं, इसका फंक्शन इंडेक्स यूज करें, यहाँ पे इसका यहाँ पे देख लीजिए इंडेक्स, तो किसी भी वैल्यू का यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे और बाय डिफॉल्ट 0 से लेके आपका लास्ट वैल्यू जो भी दे रहे हैं वहां तक लेगा और इसका लोएस्ट इंडेक्स देगा। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ वैल्यू, सपोज अगर मैंने 2 ही लिखा, तो व्हाट विल बी द आउटपुट? इंडेक्स फंक्शन विल रिटर्न द इंडेक्स वैल्यू, और यहाँ पे उसको एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट का जो भी इंडेक्स है वो रिटर्न करेगा। तो एज पर अवर टपल द फॉर दिस वैल्यू 2 वी हैव इंडेक्स 1, so it will return you that, right? So here we will be getting that. So here, और अगर मेरे को रिमूव करना है कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट, वी कैन नॉट डू दैट, तो इससे इसीलिए इससे रिलेटेड कुछ नहीं है। हाँ, मींस अगर मैं डेल यूज करूं, मैंने लिखा डेल T1 और कोई इंडेक्स सपोज 1, इसका मतलब इंडेक्स 1 पे जो T1 के अंदर वैल्यू, आई एम ट्राइंग टू डिलीट दैट, यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज वी कैन नॉट डिलीट स्पेसिफिक 1, बट इफ आई एम राइटिंग, हाँ एक और चीज लेके चलते हैं इससे पहले। सो हाँ ठीक है, ये डेल T1 कर रहे हैं, इज इट पॉसिबल? मीन्स आई एम ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द डेफिनेशन ऑफ T1, मीन्स सारी वैल्यू को हटाना है, वैल्यू क्या, पूरी डेफिनेशन को डिस्ट्रॉय करना है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डेल, बिना किसी इंडेक्स के। कैन वी डू दैट? यस सर, इट इज पॉसिबल। So it is possible because you are deleting the complete one, so it can be done. उसके बाद अगर मैं T1 यूज भी करूँ ना, अभी ये एरर देगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है because the complete definition has been destroyed now. So if you check, it will define that it is not declared. Right? So इस तरह से हम इनको भी यूज कर सकते हैं। और भी फंक्शंस है जो हर एक टाइप के साथ यूज होते हैं, जैसे मैंने बताया था len, तो पहले तो एक टपल को फिर से क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि अभी तो चला गया। सो अगर मैं हियर इफ आई एम यूजिंग len, ये टपल का फंक्शन नहीं है, ये वैसा फंक्शन जो सबके साथ यूज होता है, हमने स्ट्रिंग के साथ भी यूज किया, लिस्ट के साथ भी यूज किया। नाउ हियर वी आर ट्राइंग द सेम विद tuple. So what do you think? What will be the output? Len means number of elements in this type. How many number of elements we have in type tuple in this T1? Four. We have 4. So it will give you 4. So that is len.
इसी तरीके से अगर मैं यूज करूं कुछ और फंक्शन भी, मैक्स हमने यूज किया था, तो ये सब हर टाइप पे चलते हैं। अगर मैं करूं मैक्स T1, विल इट बी वर्किंग इन पाइथन 3 मिक्स्ड है? No, in Mixed Python है, 3 it has to be मिक्स्ड same. है तो नहीं करेगा, क्योंकि 2.7 में तो कर जाता था, बट यहाँ पे 2x सीरीज में होता था, 3x सीरीज में नहीं। उसमें चेंज किया है इन्होंने इस सिनेरियो को। तो ये तभी काम करेगा जब सिमिलर वैल्यू हो, या तो मेरी सारी नंबर होती या फिर स्ट्रिंग होती। उस स्ट्रिंग के केस में एस्काई वैल्यू के बेसिस पे वो हायरार्की सेट करता है। तो अगर मैं, हाँ, यहाँ पे अगर मेरी वैल्यू कुछ ऐसे होती, means now I'm creating a tuple which is containing only numeric value, and if I'm trying this now, yes, what will be the output? Simple है नंबर में, तो here मैक्सिमम है तो 1000 वी आर गेटिंग, राइट। मिन करेंगे तो ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू पे चला जाएगा ये। और अगर मेरी कोई ऐसी टपल होती जिसके अंदर केवल स्ट्रिंग वैल्यूज ही होती, ओके सो या ओ सिंटेक्स एक्स्ट्रा लग गया। सो हियर इस पे अगर मैं ट्राई करूं मैक्स T1, व्हाट विल बी द आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट? सेम तरीके से काम करेगा यहाँ पे जैसे लिस्ट के, क्योंकि फंक्शन तो सेम ही है ये। सर ABC. हाँ जी, मैं तो ABC Zara तो कौन with the सी? small z. सर ज़ारा Zara, like small z. mid one ये mid one वाली mid Mid one one. जाएगा। general one, जहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल z, Small. राइट, Yes, बिकॉज sir. ऑफ एस्की नंबर ऑफ इट, राइट। और अगर मिन कर दूं मैं इसके साथ, तो मिन में तो क्लियर है, बताइए क्या आएगा। ओहो, मैं एंटर कर गया कैपिटल ज़ारा। तो फर्स्ट कैपिटल वन z, है। हाँ, क्योंकि इसकी वैल्यू इनसे कम है। सो हियर सो वी कैन यूज दिस इवन अगर मेरे को वैल्यू को शॉर्टेड मैनर में देखना है। वी आर यूजिंग शॉर्टेड ऑन टपल। सी वैसे टपल को चेंज नहीं कर सकते हम, शॉर्टेड फंक्शन। और लिस्ट के साथ तो लिस्ट बेस्ड फंक्शन था शॉर्ट, जहां पे हम लिस्ट का नेम जैसे L1 है, अगर L1 डॉट शॉर्ट करके लिख रहे थे, वहां पे चेंज हो जा रहा था। लेकिन अगर शॉर्टेड यूज करेंगे तो शॉर्टेड फंक्शन क्या है? इट विल रिटर्न ए कॉपी ऑफ इट। इट विल रिटर्न ए कॉपी ऑफ टपल T1 इन शॉर्टेड मैनर, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टेड देगा, बट इट डजंट मीन कि आपका ओरिजिनल टपल चेंज हो गया। क्योंकि अगर मैं ओरिजिनल टपल की बात करूं, सपोज ये मिक्स वाला, तो शॉर्टेड में भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मिक्स अगर करूं, मिक्स पे अगर मैं शॉर्टेड चला दूं, अभी T1 ही है एंड यू आर यूजिंग शॉर्टेड ऑन दिस, तो अगर मिक्स पे आप चला रहे हैं तो इट विल गिव यू एरर, सेम रीजन में जैसे मैक्स मिन के साथ है। लेकिन अगर मेरे पास अगर कोई ऐसी वैल्यू हो जिसके अंदर केवल या तो स्ट्रिंग है या फिर हमारे नंबर वैल्यूज है, उन पे अगर मैं शॉर्टेड चलाऊं, सपोज यहाँ पे कुछ और भी वैल्यू ले लेते हैं, इफ आई एम यूजिंग शॉर्टेड ऑन दिस नाउ, तो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देगा वैल्यूज को। लेकिन इट डजंट मीन कि ओरिजिनल चेंज हो रहा है। ये पे जो अब अगर मैं टपल को प्रिंट करूं तो टपल वही है जो था, क्योंकि चेंज नहीं होता एक बार असाइन करने के बाद। तो यहाँ पे तो अगर हम देखें 0 1 2 2 इंडेक्स पे 6 है, बट अगर मैं T1 2 करूं तो क्या आउटपुट आना चाहिए? मैं यूज कर रहा हूं T1 पे, T1 2, तो क्या आउटपुट आएगा? 1000 1000, क्योंकि वो ओरिजिनल टपल वही बना रहेगा। ओरिजिनल देखे तो ओरिजिनल वही है, वो चेंज नहीं हुआ। हाँ, इसको मैं किसी और में अगर करना चाहता यूज तो ऐसा भी कर सकते थे हम कि भाई इसको कहीं और पे स्टोर कर लेते T2 की, मतलब जो शॉर्टेड कॉपी जो है उसको मैं किसी और वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ एंड वी आर गेटिंग, तब इसका ये चेंज है। T2 वो करेंगे तो सही है, असाइन किया हमने किसी में, बट ओरिजिनल चेंज नहीं होता, वो एक दूसरा टपल बना। सो ये भी कुछ फंक्शन है। इसी तरह सम, वैसे तो ये मैंने असाइनमेंट में भी दिया था, सम कर दे, अगर सम T1 करूं तो ये जितने भी एलिमेंट है उनका सम दिखा देगा, राइट। तो सम यूज करें तो ये भी ध्यान रखना है कि वैल्यू भी मेरे लॉजिकल वैल्यूज हो। अगर यहाँ पे मिक्स हो गया तो फिर सम काम नहीं करेगा, राइट। तो न्यूमेरिक वैल्यू पे ही करता है ये। सो हियर दीज आर, और ये कोई टपल बेस्ड या लिस्ट बेस्ड नहीं है, ऐसे फंक्शन है जो बिल्ट इन नेम स्पेस में है। मींस वी कैन यूज दिस ऑन दिस डिफरेंट टाइप्स। जैसे मैंने लैन का भी बताया, लैन आप लिस्ट पे भी, टपल पे भी, और यहाँ पे स्ट्रिंग पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब फंक्शन सब पे यूज कर सकते हैं।
Hello. Unlike list, cannot be changed once it Hello. has been assigned. But if the element is, yes, tell me. हाँ जी, आपकी बताइए। आवाज नहीं आ रही है। सर आपका आवाज थोड़ा कट हो रहा था बीच में। सर कनेक्शन क्या ब्रेक हो रहा है बोला? बीच में। ओके, अभी ठीक है, अभी सही है। जी हाँ, अभी सही है। अभी सही है। ओके, ठीक है। Student, am I audible? Yes sir. Yes, sir. Yeah, yes sir. ठीक है, ठीक है। एक्चुअली वो ना नेटवर्क कनेक्टिविटी का कुछ इशू था, अभी ये ना इंटरनेट चला गया था कुछ मोमेंट के लिए, इसलिए हुआ होगा। ठीक है, अभी सही है, तो प्रोसीड करते हैं। सो here see, we are just reviewing the fact about tuple. Unlike list, tuples are immutable. This means that element of a tuple cannot be changed once it has been assigned. But if the element is itself a mutable data type like list, its nested item can be changed. We have already seen this. We can also assign a tuple to different value. तो अगर पूरे tuple को change करें तब हो जाएगा, but specific पे change करें तो नहीं होगा. See, here we have one tuple which is containing some values. तो अगर assign करें value नहीं होगा, right? लेकिन म्यूटेबल टाइप पे चेंज करें तो हो जाएगा, तो हम ले चुके हैं। और अगर पूरे टपल को चेंज करें, स्पेसिफिक को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पूरे टपल को ही बदल दें आप, यहाँ पे ये वैल्यू और पूरा एक रीअसाइन कर दिया, तो एक तरीके से डायनेमिक नेचर के अकॉर्डिंग इट्स अ न्यू टपल, तो वो चेंज हो जाएगा। बाकी ये जो प्लस यहाँ पे कॉन्काटिनेशन की तरह काम करता है, जैसे स्ट्रिंग और लिस्ट के साथ यूज किया, एंड दिस मल्टीप्लिकेशन इज वर्किंग एज ए रिपीटेटिव ऑपरेटर विद टपल, जैसे लिस्ट के साथ। और डेल का भी ये एग्जांपल हम ले चुके हैं, काउंट इंडेक्स भी हम ले चुके हैं, और लेन मैक्स मीन सॉर्टेड सम, ये भी हियर वी हैव टेकन दिस केसेस आल्सो, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा जरूर है एडवांटेज ऑफ टपल ओवर लिस्ट एक्चुअली, बट इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं कह सकते कि हम एडवांटेज है, इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। इफ वी आर हैविंग सच टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट वेयर वी वांट टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, इनिशियली हमने वैल्यू असाइन किया एंड आफ्टर दैट वी वांट टू गेट फ्लेक्सिबिलिटी that at any time we should have one provision to change any value at any time, then we should prefer which one? अगर फ्लेक्सिबल मैनर में मेरे को वर्क करना है वैल्यूज के साथ, तो कौन से लिस्ट प्रेफर, तो प्रेफर लिस्ट। बट इफ यू वांट टू वर्क इन राइट प्रोटेक्टेड मैनर वेयर वी वांट दैट once we have assigned the value, these values should not be changed, in that case which data type should be preferred? Tuple. So it depends on requirement actually, हमें flexible manner में काम करना है या restricted manner में काम करना है, based on that we can make use of what? List or tuple. Now we will continue with the control flow structure. So already we have discussed about conditional statement, but before that I would like to mention one more fact about this slicing. अभी तक slicing में we have used only in slicing till now we have specified this thing कि जब भी हम slicing यूज कर रहे हैं तो उसका कन्वेंशन ऐसा था, स्टार्ट इंडेक्स कॉलन एंड इंडेक्स, अभी तक यूज किया था हमने, एंड हियर इन दिस केस इट इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्स अप टू एंड इंडेक्स -1, यही वैल्यू ले रहा था यहाँ पे, इट विल टेक वैल्यू फ्रॉम values from start index to and index -1, जो भी वैल्यू एंड इंडेक्स पे है उससे एक कम, उससे पहले वाली लोकेशन पे। बट एक्चुअली नाउ वी विल सी द कंप्लीट पिक्चर ऑफ इट। Actually there is one more variation of it, and in that variation is just like this. Step size. Here when we are specifying, it will take the value from this index up to this -1 in continuous manner, but agar if you want to get the value having some interval in between,
इवन यू वांट टू टेक द वैल्यूज, अभी तक क्या है यहाँ पे लेफ्ट टू राइट चल रहा था। इस सिनेरियो में हम जो वैल्यू को ले रहे थे दैट वाज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो डायरेक्शन थी मेरी लेफ्ट टू राइट थी, राइट। लेकिन इस साइज में, स्टेप साइज पे अगर मैं नेगेटिव सिंबल यूज करूं तो वी कैन गेट द वैल्यू, वी कैन कंसीडर द वैल्यू राइट टू लेफ्ट। उसका अपोजिट अगर माइनस प्रिंट कर दे, थर्ड वाले वेरिएशन में अगर माइनस प्रिंट करे तो ये अपोजिट मैनर में इन चीजों को लेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लेगा, ना कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में। I'll take one example so that you can understand it even more clearly. So here I'm going to take one example of it. Suppose I'm having one value और सारे टाइप्स पे चाहे स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, टपल हो, सिमिलर वे में काम करेगा क्योंकि स्लाइसिंग है, तीनों के लिए सेम तरीके से यूज होता है। सीक्वेंस टाइप के लिए हर एक सीक्वेंस टाइप के लिए कॉन्सेप्ट होगा। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग स्ट्रिंग बट इट विल वर्किंग इन द सिमिलर वे फॉर अदर सीक्वेंस टाइप आल्सो लाइक योर लिस्ट एंड टपल. Suppose I am having one string, and till now you know that when we are writing this 0:10, what will be the output? See the index of this 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Last index 9 है और मैंने 10 लिखा है, तो it will take the value start from 0 up to 10 minus 1, that is 9. Means it will return a string itself. Right? It will print that. ठीक है. And if I am writing the, so by default क्या है कि मैंने specify नहीं किया, but by default this value is 1. अगर मैं specify नहीं करता और ये variation use करता तो by default this is 1. Even if I am trying this, it will give you the same output, right? But if you want to get the value having some interval, मेरे को continuous चाहिए, कुछ interval पे चाहिए, तो you can change the value. If I have written 2 here, now it will take the value starting from this up to this -1. ये concept same रहेगा इन दोनों के लिए, बट एट द इंटरवल ऑफ 2. अब ये 2 के इंटरवल पे वैल्यू लेगा तो क्या आएगा, तो मींस 0 इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से लेगा, उसके बाद 2 के इंटरवल पे लेगा, 2 के इंटरवल पे लेगा तो 1 2, इससे अगर मैं करूँ 1 2 1 2 1 2 1 2, सो जो भी 2 के इंटरवल पे जो वैल्यूज है इट विल टेक दो. सो इट इज सी, इट इज टेकिंग सी 1 2, दैट इज दिस A, 1 2 स्पेस 1 2 O and 1 2 D. So it is taking like, so it is taking the value having interval of 2, right? So that is the scenario, right? और अगर मैं यहाँ पे suppose 3 कर दूं, can you tell me the answer? हाँ जी, अब बताइए आंसर क्या आएगा. अब ये 3 के इंटरवल पे लेगा, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं. CCOA. 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 बिल्कुल ठीक है. तो 0 1 2 3 1 2 3, right? 1 2 3 this, so it is taking CCOA. So that is fine. इवन इसके भी कई वेरिएशन हो सकते हैं. सपोज अगर मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं किया, ये किया है, ये अगर मैं यूज कर रहा था, ये इसका मतलब it will take the value from the start index up to last index. It means even it will take every value from the start, we should say. और अगर मैं यहाँ पे ये सिनेरियो भी यूज करता हूँ, जैसे हमने यूज किया था यहाँ पे, तो इसको भी यूज किया तो इट विल रिटर्न द स्ट्रिंग इटसेल्फ, राइट? सेम. तो ये भी वेरिएशन है, राइट? लेकिन अब देखो इसी वेरिएशन में मैं क्या करूँ, अगर मैं थर्ड वाले पे, ये इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये 1 है. इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी लिखूँ ना, बाय डिफॉल्ट ये 1 ही है थर्ड में ना, सो इट इज गिविंग दैट. बट if with this if you are using -1, it means now it will take the thing from right to left. अब ये डायरेक्शन को बता रहा है, जैसे आप मूवमेंट -1 करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर लेगा, मतलब लास्ट से स्टार्ट तक जाएगा, अब रिवर्स डायरेक्शन में लेगा. सी द आउटपुट. नाउ इट इज स्टार्टिंग टू एक्सेस फ्रॉम दिस लास्ट ADION space CADC. आर यू गेटिंग? सो इट इज टेकिंग द वैल्यू लाइक दिस. बट अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, अगर रिवर्स डायरेक्शन है तो अपर से लोअर की तरफ जा रहा है तो वैल्यू भी अकॉर्डिंगली होनी चाहिए. लेकिन अब इस सिनेरियो में अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं 0 10, तो 0 10 1, तो ये वैल्यू ले रहा था लेफ्ट टू राइट सारी वैल्यू, क्योंकि 10 एंड 9 इंडेक्स पे आएगा, जैसा भी चेंज करेंगे इंडेक्स वहीं तक वैल्यू लेगा, उससे एक पहले बल्कि. लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 0 10 -1 किया, अब हाँ जी, अब क्या आएगा, स्टार्ट से वैल्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो रिवर्स में जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है तो माइनस और रिवर्स है, तो क्या ये काम करेगा, कुछ दिखाएगा आपको? No. Empty. इट विल गिव यू एम्प्टी, क्योंकि
ये अब नेगेटिव डायरेक्शन ले रहा है तो कुछ नहीं मिला उसको, लेकिन हाँ इसको मैं अगर ऐसे लिख देता 10 0, इट मीन्स इट विल टेक द वैल्यू स्टार्टेड फ्रॉम दिस अप टू दिस -1, इससे एक लोकेशन पहले, क्योंकि -1 की वजह से क्या रिवर्स में चलेगा, एस की वैल्यू ये है तो रिवर्स में चलेगा, राइट। रिवर्स में चलेगा तो 10 से ले रहा है, 10 तो है नहीं, 9 है लास्ट, तो ऑब्वियसली इस रेंज के अंदर होना चाहिए, तो 9 से 0 से एक लोकेशन पहले, मैंने 0 लिखा तो उससे एक लोकेशन पहले, क्योंकि जो भी सेकंड पर उससे एक लोकेशन पहले, बस इससे हमने बताया बैकवर्ड डायरेक्शन में और इंटरवल 1 ही है, तो कंटिन्यूसली। तो क्या आउटपुट आना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, क्या आउटपुट आना चाहिए? एस की वैल्यू यही है क्योंकि इम्यूटेबल है स्ट्रिंग। हाँ जी बताइए क्या आउटपुट आना चाहिए? एडियन CAD वो लास्ट कैपिटल से चला जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि लास्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक लोकेशन पहले है। अगर मेरे को वो लेना है तो क्या कर सकते हैं हम, कुछ भी मत करो, सो इट विल टेक एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम दिस इंडेक्स, राइट, इन बैकवर्ड डायरेक्शन ऑब्वियसली, इसलिए हमने अपर वैल्यू की है। तो अब क्या आउटपुट आएगा, जस्ट उसका ऑपोजिट, मीन्स सिमिलर टू दिस, ये भी सेम था और ये भी सारी वैल्यू ले लेगा, राइट। सो और अगर मैं यहाँ पे इंटरवल यूज कर दूं तो कोई इंटरवल हम यूज करें जी, कोई इफ आई एम यूजिंग सम इंटरवल हियर, सपोज मैंने यहाँ पे किया -2, अब तो सेम है 2 के इंटरवल पे लेगा बट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि माइनस है ना इसके साथ, तो मैं कोई इट विल टेक वैल्यू स्टार्टेड फ्रॉम दिस इंडेक्स एंड इट विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम दिस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये 9 इंडेक्स है तो इसी के रेंज में आ रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा तो क्या आउटपुट आएगा, तो सॉरी इस पे करेगा, किस पे, सीडेक नोएडा पे, ऐसा है ना, ये तो आउटपुट आया सीडेक नोएडा पे करेगा, तो सीडेक नोएडा पे करेगा तो क्या वैल्यू आएगी, एक काम करते हैं, AINCD। हाँ for the sake of simplicity I am just printing the value of this first and now, so हाँ जी अब बताइए क्या आएगा, AINCD। AI, तो हाँ AINCD। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करेगा और 2 के इंटरवल पे लेना, तो 1 2 फिर 1 2 1 2 1 2 तो यहाँ तक लेगा, सो AINCD, सो सेम। और यही कॉन्सेप्ट अगर आप मैं लिस्ट के साथ भी यूज करूँ ना, उन पे भी काम ऐसे ही करता है। सपोज मैंने एक लिस्ट ली, हियर आई एम टेकिंग वन लिस्ट एंड आई एम असाइनिंग सम वैल्यू, स्पेसिफाइंग वैल्यूज द लिस्ट, और अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ L1 : 1, व्हाट डू यू थिंक क्या आउटपुट आएगा? Sir, it will print all सेम these. रहेगा। नॉर्मल लिस्ट फिर से वैल्यू, ठीक है, सो इट विल रिटर्न लिस्ट इटसेल्फ, राइट, L1, तो L1 की वैल्यू को प्रिंट करेगा, राइट। और अब अगर मैं इसमें कुछ इसके वेरिएशन यूज करूं, इफ आई एम यूजिंग सपोज आई एम राइटिंग समथिंग लाइक दिस, अब क्या आउटपुट आएगा? सर it will सेम print लिस्ट up to बट 70. 89। हाँ लास्ट आइटम को नहीं लेगा, स्टार्ट से ही ले रहे हैं, लास्ट आइटम नहीं लेगा बस, क्योंकि एक लोकेशन पहले लेगा, लास्ट इंडेक्स वैल्यू ही मेरा 7 है, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इससे एक लोकेशन पहले, तो इट विल टेक वैल्यू फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्स 0 अप टू दिस, सो हियर इट विल गिव यू दैट। और अब अगर मैं इसमें कर दूं यहाँ पे और 2 करेंगे तो अब क्या आउटपुट आएगा? 10, 30, 50, 30 70. 50 70। 2 के इंटरवल पे वैल्यू ले लेगा, ठीक है ना, 10 30 50 70। और इफ आई एम यूजिंग -2 हियर नाउ, कॉन्सेप्ट सेम है जैसे स्ट्रिंग के साथ था। अब क्या आएगा आउटपुट? ब्लैंक। यस, बिकॉज वी हैव यूज्ड दिस नेगेटिव बट स्टार्टेड फ्रॉम 0 दिस, तो अपर टू लोअर होना चाहिए, हमारा तो लोअर टू अपर जा रहे हैं, तो इट विल नॉट गेट एनीथिंग, मींस एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा आपको। तो अगर मेरे को करना है तो हाँ, तो इस सिनेरियो में वी शुड राइट अपर वैल्यू फर्स्ट
अपर टू लोएस्ट पे जाएंगे। बैकवर्ड डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो अगर मैंने लिखा 7:0, यस, कैन यू टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस नाउ? लिस्ट आपके सामने L1 80, 60, 40, 20. ठीक है, सही है। तो 7 से इससे एक लोकेशन पहले लेगा, तो 7 इंडेक्स यही है मेरा, तो 80 और 2 के इंटरवल पे है तो 60, उसके बाद 40, उसके बाद आपका 20, क्योंकि उसे 2 के इंटरवल पे है तो इट विल टेक दैट। तो ये पॉसिबल वैल्यूज है, सो इट विल टेक, सो इट इज वर्किंग इन द सिमिलर वे एज इट हैज वर्क फॉर स्ट्रिंग विद लिस्ट आल्सो। इसी तरह से टपल के साथ भी काम करेगा, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं फर्दर। तो रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए फंक्शन भी था लिस्ट के साथ, तो लिस्ट का नेम लेके L1 डॉट रिवर्स करते हैं तो भी आ जाता है। एक और फंक्शन है रिवर्स्ड, ये आपका किसी भी टाइप पे यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे L1 के साथ यूज करूं इसको, तो ये रिटर्न करेगा कॉपी, ओरिजिनल के साथ चेंज नहीं करेगा। सो रिवर्स्ड L1 ऑब्जेक्ट है तो इसको किसी पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट करके हमें करना पड़ जाएगा, इस पे हम बाद में आएंगे। चलो, ये इसका एड्रेस रिटर्न कर दिया इसने, सो रिवर्स वे में आपको वैल्यू देगा, क्योंकि जब हम यूज करें ये एक्चुअली रिटर्न करता है आपका रिवर्स ऑब्जेक्ट। उस पर्टिकुलर वैल्यू को देखने के लिए किसी पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज उसके एड्रेस को रेफर करता है जिस पे वैल्यू गई है। चलो, इस पे हम बाद में आएंगे। सो ये आप किसी भी टाइप के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे आपको इसका वो भी देखिए रिवर्स्ड, तो कोई भी सीक्वेंस टाइप होना चाहिए, ठीक है ना, तो कोई भी हो उसके साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन एक कॉपी जनरेट कर रहा है, ओरिजिनल आपका चेंज नहीं होता यहाँ पे। अगर L1 डॉट सॉर्ट करके फिर L1 डॉट रिवर्स करते, डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू आती तो वो ओरिजिनल में चेंज, L1 डॉट रिवर्स ओरिजिनल में चेंज करता है, बट यहाँ पे वो वैल्यू वही बनी रहती है, क्योंकि ये लिस्ट का फंक्शन नहीं है, ये ऐसा फंक्शन है जिसमें कोई भी सीक्वेंस टाइप स्ट्रिंग लिस्ट टपल आप पास कर सकते हैं। तो रिवर्स करेंगे तो रिटर्न करता है आपका, वैल्यू रिटर्न नहीं करता, उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, मतलब उस रिटर्न करता है उस एड्रेस को जहाँ पे ये वैल्यू है, उसको डिस्प्ले कराने के लिए वैल्यू को किसी पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट करना होगा। अच्छा, इट इज कन्वर्जन से ये भी याद आया कि इफ यू सपोज यू हैव वन लिस्ट L1 and here we have some values 1 2 3, if you want to convert this in tuple you can convert this as I have mentioned। even जो data type है ना, type can be used as a typecasting function also। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करना, सपोज एक मैंने वेरिएबल लिया T1 and I want to get the value in this T1 in the form of tuple from this list, तो आप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, टपल टाइप में कन्वर्ट करना है तो यू कैन राइट लाइक दिस L1। तो ये क्या करेगा, L1 जो कि एक लिस्ट है, इट विल कन्वर्ट द लिस्ट इनटू टपल एंड आफ्टर दैट वैल्यू विल बी असाइन्ड इन दिस। तो हियर यू कैन सी, सो ऑब्वियसली अगर आप चेक करें टाइप ऑफ L1 इट इज लिस्ट टाइप, एंड इफ यू चेक द टाइप ऑफ T1 इट इज ऑफ टपल टाइप, और वैल्यू को भी प्रिंट करें, L1 की वैल्यू ये है और T1 की वैल्यू ये वी हैव दिस, ये टपल है। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका ऑपोजिट भी है, सपोज अभी ये मेरा टपल है, आई वांट टू कन्वर्ट दिस टपल इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, तो कैसे करेंगे, और एक L2 है उसके अंदर मेरे को आई वांट टू गेट द वैल्यू इन दिस लिस्ट टू फ्रॉम दिस टपल बट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, तो यू कैन कन्वर्ट इनटू लिस्ट, सिंपली जो नेम है लिस्ट वही कन्वर्जन फंक्शन की तरह काम करेगा एंड यू आर यूजिंग T1, so the value of this tuple T1 will be converted into list type and after that these values will be assigned in L2। तो अगर मैं प्रिंट करूं यहाँ पे L2 की वैल्यू, यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। सो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, सो इट इज आल्सो पॉसिबल, वी कैन कन्वर्ट टपल इनटू लिस्ट और लिस्ट इनटू टपल एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ये भी कुछ फंक्शंस हैं जो हम इसके साथ यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग सम मोर फंक्शन व्हिच कैन बी वेरी हेल्पफुल। तो अब आपको यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल, तो अब इस फंक्शन को ले सकते हैं। एक स्ट्रिंग बेस्ड कुछ और फंक्शन को मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, एंड हियर आई एम गोइंग टू टेक वन फंक्शन स्प्लिट। नेम एंड इट इज स्ट्रिंग फंक्शन, ये स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, तो स्ट्रिंग वेरिएबल होना चाहिए, उनके साथ हम इनको यूज कर सकते हैं। दीज आर सम मोर स्ट्रिंग फंक्शन यू कैन से।
तो स्प्लिट क्या करता है, एज द नेम सजेस्ट, स्प्लिट मीन स्प्लिटिंग, ब्रेकिंग। तो ये क्या करेगा, स्प्लिट करेगा, ब्रेक करेगा, स्प्लिट स्ट्रिंग, स्प्लिट स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स। और जो स्प्लिट करके, तो स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो स्प्लिट करेंगे तो इन कैरेक्टर्स को अलग अलग सिंगल कैरेक्टर में डिवाइड कर देगा, स्प्लिट कर देगा, एंड इट विल रिटर्न दोज स्प्लिटेड वैल्यू। स्प्लिटिंग के बाद जो वैल्यूज आ रही है, इट विल रिप्रेजेंट दोज वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। सो वी कैन से इट विल स्प्लिट स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स, जो आउटपुट मेरे को मिलेगा, it will be in the form of a list, returns a list. What is the meaning of it? Now I'll take one example. Suppose I am having one value, Miss Kumar Dabur, suppose. Now if you are using split with this, तो क्या काम करेगा, तो ऑब्वियसली स्प्लिटिंग का जो रोल है ना, स्प्लिटिंग का रोल तभी होगा जब कोई कंपाउंड ऑब्जेक्ट के साथ आप डील करो। कंपाउंड में जो कुछ कंपोनेंट से मिलके बना, राइट। और बाय डिफॉल्ट अब जब स्प्लिटिंग की बात करते हैं हम, तो स्प्लिटिंग का कोई बेसिस तो होना चाहिए कि अगर मेरे को कोई, सपोज इफ आई एम हैविंग, कोई मेरे पास कोई भी चीज है, सपोज आई एम हैविंग रोड, राइट, रोड ऑफ, सो अगर उसको मेरे को स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है, तो कोई पॉइंट तो होगा जहां से हम उसको ब्रेक करेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना है तो कोई एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहां से हम ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट है ना, किस बेसिस वो ब्रेक होगा, सो रेफरेंस पॉइंट इज स्पेस, बाय डिफॉल्ट स्पेस है। जहां पे भी इस स्ट्रिंग में स्पेस है, उस स्पेस के बेसिस पे ये इसको स्प्लिट कर देगा, एंड इट विल रिटर्न यू द स्प्लिटेड वैल्यू। ए वैल्यू डिफरेंट वैल्यू की तरह जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। सी इफ आई एम यूजिंग दिस, मैंने अभी यहाँ पे कुछ एंटर नहीं किया पैरामीटर में, सो इफ आई एम यूजिंग इट, सो दिस विल बी द आउटपुट। तो इसने क्या किया, जहां जहां स्पेस था उसके बेसिस पे इसको स्प्लिट किया, और ये जो वैल्यूज है उनको रिटर्न किया एक लिस्ट के फॉर्म में। सो दैट इज स्प्लिट। और अगर मैं कुछ और यूज करना चाहूं तो बाय डिफॉल्ट तो ये है, लेकिन अगर मैं कोमा के बेस पे अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट करना चाहूं, सपोज मेरी वैल्यू, ओके, सपोज आई एम हैविंग माय वैल्यू लाइक दिस, कोमा कहीं पे भी हो सकता है, और जिस बेसिस पर स्प्लिट करते हैं वो आपके कंटेंट का पार्ट नहीं बनता। अब अगर मैं यहाँ पे यूज करूं, अच्छा चलो अगर मैं इसको यूज करूं तो क्या आउटपुट आएगा बताइए। बाय डिफॉल्ट स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट करता, बट स्पेस तो कहीं है ही नहीं। सो व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट विल बी द सेम आउटपुट आएगा सर। सो वी विल बी गेटिंग सेम आउटपुट। ये क्या करेगा, सारी वैल्यू को एक सिंगल एलिमेंट की तरह प्रिंट कर देगा, सिंपल उसी को प्रिंट करेगा एक ही वैल्यू, क्योंकि स्प्लिटिंग का जो बेसिस है वो है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन सर वॉइस ब्रेक हो गई, सर कनेक्शन ब्रेक हो गया। हेलो 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 सर आपकी आवाज नहीं आ हाँ रही। जी, एम ऑडिबल? सर यस हाँ, No, मैं- you're नाउ यू आर ऑडिबल सर। कनेक्शन ब्रेक हो गया सर। कोई भी दे दो यार। हाँ बाथरूम नहीं गया ना, नहीं लगेगा, खवाएगा ही नहीं। बाथरूम जाओ तो कोई मना करो। ये नहीं, वो नहीं छोड़ सकता, ब्रेक मिलता है बीच में तब उठूंगा। someone is unmuted. विकास, आपका आवाज आ रहा है।